will become a chamber. Just open this for some time. Okay. Okay. So what we did yesterday? Yes. Pyramid of number, pyramids of mass. So have we completed number? Okay. What is pyramid of number? Huh? What is pyramids of number? Then herbivores, carnivores, then? नहीं. Pyramids of number is not like this. Explain it clearly. कैसा होता है? Base is like vast. क्यों vast होता है? Why it is vast? Because number of species present in the bottommost is high, right? How is pyramids of it's this pyramid is always upright, right? Just revise what we have done yesterday. 5 minutes revision, and then we'll continue with the new topic. I mean, the continuation of this topic. Kari? अच्छा पीछे वाला. Okay. बताइए. What is pyramids of number? पर हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था. We started our classes with something else. We started with energy flow. Very good. Energy flow. Give me the definition. What is energy flow? हाँ. हाँ. So what is the rule in that? And who has given this rule? Yes, he has given a rule that there is, yes, 10%. That energy flow will be always 10% from one to another species. जब भी energy flow होगा 10% होगा. और 10% ही क्यों होगा? What is the reason? Ma'am, 90% is utilized for respiration. Energy will be utilized for other metabolic processes and respiration. What else? What is the other thing? Keep on revising the notes. You have notes in front of you. Ma'am, topic level limited होता है. हाँ. फिर से बोलिए. Come again. Ma'am, topic level limited होता है. Okay, trophic. What is trophic level? नहीं रिवाइज किया. नहीं किया ना रिवाइज. Different level of food chain is known as trophic level. Different level of Food yes, chain. different levels, right, in a food chain. So, for example, producers will define one trophic level, then another level will define another trophic level. For example, your next consumers will define another trophic level. Trophic level means that this is having the producers are having the maximum energy, and then energy stored will become less. क्यों? क्योंकि 10% ही flow हो पाएगा. So this is known as one trophic level, and this is known as another trophic level. So energy flow के medium से we show trophic levels. ठीक है? What else? Food chain, food webs. We did that also. बस topic देखिए और revise करिए. That's it. तो यही तो करना है. सिर्फ topic देखिए main and just have a revision. बोलिए, anybody?
पिरामिड्स ऑफ नंबर, जब फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या है, दिस ऑल वी हैव डन. जल्दी जल्दी बताइए फूड चेन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन? अ सीक्वेंशियल लीनियर अरेंजमेंट है, एक ही अरेंजमेंट है, उसमें नथिंग इज बीन एडेड. अब जब फूड वेब क्या होगा, दे आर मल्टीपल स्पीशीज आर डिपेंडेंट ऑन वन. So for example plants, उसमें cow भी present है, deer भी present है, everyone is present, so that is known as, this will become what, a web. So you call it as very complicated and complex web. Okay, so mostly food webs occur in the ecosystem, food chain are hardly to find because this is how the complex ecosystem is, ecosystem का part है. ठीक है, so क्या है food webs. Next क्या है उसके अलावा, what else we did? हाँ, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में सबसे पहला क्या है, यू आर न्यू इन द क्लास टुडे, अच्छा ऑनलाइन ही आप टेकन है, ठीक है. यस बताइए बताइए. पैरामीटर्स ऑफ नंबर, व्हाट इज पैरामीटर्स ऑफ नंबर? That the base will have the maximum number of species with respect to another. What we call that term as you move to upwards, क्या बोलते हैं? Apex. Excellent, we call it apex. As you move towards apex, it will decrease in number, right? And it will keep on decreasing as you go upwards. ठीक है, अब इसमें भी we did example. Done. आप तो थे क्लास में, आपने क्लास रिवाइज किए हैं? अच्छा, आर यू गेटिंग ऑल दिस देन? ठीक है, एपेक्स क्या है, व्हाट इज एपेक्स? एज यू मूव अपवर्ड्स. अब मुझे ये बताइए कि जब हम इसमें बात करते हैं तो एपेक्स विल बी हैविंग द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम नंबर, राइट? सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स. अब किसकी बात हो रही है? ग्रासलैंड होगा तो कैसा होगा? अपराइट. और इन्वर्टेड किस में होगा? फॉरेस्ट वाली में. वेरी एक्सीलेंट. या गाइस, व्हाई आर यू नॉट रिवाइजिंग? क्या हो गया सबको? मैम आई हैव अ डाउट कि आपने बोला एपेक्स अपराइट में तो एपेक्स सबसे ऊपर होता है, अब इन्वर्टेड में वही एपेक्स वही सबसे ऊपर वाला ही लेवल होगा कि कहाँ पे होगा इन्वर्टेड में अगर बोला जाए तो? एपेक्स मींस दिस पॉइंटेड. यस मैम, लेकिन इन्वर्टेड में? हाँ सेम. नहीं तो मैम इन्वर्टेड में नीचे होगा ना एपेक्स. हाँ वही सेम. यस. ओके, थैंक यू मैम. ठीक है, बिकॉज वी कॉल दैट एज अ ब्रॉड बेस. जो ये है दिस इज ब्रॉड. ठीक है, डन, क्लियर. ओके, नाउ मूव टू पिरामिड्स ऑफ बायोमास. राइट डाउन. हैव यू रिटन पिरामिड्स ऑफ बायोमास? लिख लिया था? ओके, सो आई रिपीट अगेन. Pyramids of biomass represent the relationship between different trophic levels in the terms of biomass. There is generally gradual decrease in biomass of organism at successive levels from producers to carnivorous. Thus, pyramids of biomass is upright for grasslands. सबसे पहला point, it is upright for grasslands. Grasslands के लिए upright क्यों है? Because grasslands are spread over hectares of land, and when we count the weight of that, it is going to increase like anything, right? Apart from that, what we have next level, the consumers of these grasslands. कौन consume कर रहा है grasses को? herbivores. herbivores का क्या होगा biomass फिर? कम होगा, right? Because this is upright. upright खुद ये बताता है कि biomass कम होता जा रहा है. ठीक है, so mass is highest or it is maximum here and minimum here. ठीक है, now next we have the pyramids of biomass is upright for grassland. However, in the case of pond, as the producers are algae are least in number, and this value gradually shows an increase towards the apex. अब देखिए, it's not always that the plants are producing the food, right? There are certain bacteria also, there are certain other organisms also which are very very small. For example, algae, right? They have the ability for the formation of their own food. वो अपना food खुद बना सकते हैं. Why? Because they have a green pigments present which is helpful in synthesizing their own food. Since they can synthesize their own food, what will happen then? They are the producers, right? They are the producers of their own food. So can I say algae
पे भी लोग डिपेंड होंगे, राइट, एल्गी पे. They are going to get dependent on algae also, and when they are going to get dependent, but the amount, the biomass of algae is not that much. क्योंकि algae कैसा होता है, have you seen algae? They just stick to the surface, right? The weight is negligible. So can we say that algae का जो weight है is going to be less as compared to people who are the consumers who are dependent on it? So can I say it's going to be inverted but not upright like grasslands, right? Can I say like that? How many of you are getting this point? ये वाला किसको समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है एल्गी वाला? नहीं आया? कुछ कुछ पार्शियली आया है ना? मैम अलगे वाला समझा दो, नहीं आया अभी जो आपने बताया. हाँ, तो एल्गी देखिए, एल्गी भी सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड, पर एल्गी का जो बायोमास होता है वो बहुत कम होता है बिकॉज दे स्टिक टू द सरफेस. ठीक है, ये रीजन ये वो स्टिक कर जाते हैं सरफेस को बिकॉज उनका जो लेयर है, द वेट ऑफ देम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो एल्गी को अगर हम कैलकुलेट करें, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स हु आर प्रेजेंट ऑन देम, राइट. सो दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड. तो इसलिए क्या है, इन्वर्टेड है. ठीक है. Now, how is going to be the energy flow? Have you written some types of it? नहीं मैम, आपने लास्ट जो लिखवाया था 10 मेकिंग पिरामिड्स इन्वर्टेड इन शेप लिखवाया था, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है. ठीक है, ओके, लिखिए. एक डायग्राम ड्रॉ करिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम का. Just open it. It's not working. गैस चैम्बर बन जाएगा. क्या हो गया? बाहर से? किसका?
So ये कौन सा इकोसिस्टम है? फर्स्ट वन बायोमास वी आर डिस्कसिंग, राइट? आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट वन, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. व्हाट अबाउट सेकंड वन? नहीं समझ आया? हाँ, ये बायोमास का है, पॉन्ड इकोसिस्टम का. वेल्स का वेट क्या रहता है? What is the weight of a fish? Big fish, large fish, dolphin, whales, sharks. It is going to be very, very huge, like large as compared to the phytoplanktons. ठीक है? Phytoplanktons का जो वेट है वो बहुत कम रहेगा, फिर जू प्लैंक्टॉन्स का बढ़ जाएगा, देन स्मॉल फिशेस का अगेन, एंड large fishes will have more. We are only talking, or see, whenever we talk about pond ecosystems, so we are only talking about that area in which the ocean is or the pond is. ठीक है? अब उस एरिया में जो फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है, राइट? ग्रासलैंड्स में क्या है, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, बहुत दूर दूर तक लैंड्स है. पॉन्ड्स में ऐसा नहीं है, ठीक है? या फिर ओशंस में जो हम रिवर सिस्टम या फिर हम पॉन्ड्स की बात कर रहे हैं उसमें बहुत कम एरिया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट कम रहेगा. प्लैंक्टन्स को क्या, व्हाट इज दैट, व्हिच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसर्स. सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल डिफाइन कर रहे हैं, सबसे नीचे है मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है? मैम बस एक चीज बता दीजिए, पॉन्ड इकोसिस्टम तो चलिए छोटा है, मरीन इकोसिस्टम में क्या होगा? क्योंकि जो वो तो सेम जितना लैंड है उतना ही. सेम होगा, ओके. ठीक है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, नहीं आई है? कितने लोगों को आ गई है? प्लीज रेज योर हैंड्स. मतलब काफियों को समझ में आ गई है. ओके, ठीक है. आपको नहीं आई है? एजुकेटेड नहीं आया है? अच्छा, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया? हम्म, देखो, फाइटोप्लैंक्टन, जब हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, द एरिया इज लेस, राइट? So we are talking about phytoplanktons are somebody who can create their own, synthesize their own food. Phyto means light. Through the help of the light, they can create their own food. And there are other species who are present on phytoplanktons. जो species present है, उनका जो weight है वो ज्यादा है. Biomass, ये pyramid biomass का है, ठीक है? So it is going to be what? नहीं, ये देखो, ज्यादा है, राइट? द जू प्लैंक्टन्स आर ज्यादा, ठीक है? तो इट इज गोइंग टू बी लार्जर, ठीक है? दैट्स व्हाई इन्वर्टेड. शार्क्स, वेल्स सबसे ऊपर, लार्ज फिशेस इवन मच मोर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट राइट डाउन पिरामिड्स ऑफ एनर्जी. सबसे इजी पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है. व्हाई? सबसे इजी पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है. व्हाई? ऑलवेज अपराइट. क्यों? एनर्जी फ्लो कैसे करेगा? यस, यूनिडायरेक्शनल. राइट डाउन पिरामिड्स ऑफ एनर्जी. Write down. Of the three types of ecological pyramids, of the three types of ecological pyramids, the energy pyramids give, the energy pyramids give
the best picture of overall nature of the ecosystem. Full stop. In this type of pyramid, we missed something. Acha. Write down again. Of the three types of ecological pyramids, the energy pyramids gives the best picture of overall nature of the ecosystem Full stop. In this type of pyramid, the topic level is decided depending upon the rate at which the food मैम is रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा स्लो. In this in this type of pyramid, the in tropic this level is okay in this type of pyramid, the topic level is decided depending upon the rate at which the food is produced. Write down a note. In shape it is always upright. In shape it is always upright. कैसा होगा हमेशा? ऐसा. Always upright. Energy flowing from producers till here. Of the three types of ecological pyramids, energy pyramids gives the best picture of overall nature of the ecosystem. In this type of pyramid, the topic level is decided depending upon the rate at which the food is being produced. It is in shape, it is always upright. Write down as in most of the cases, as in most of the cases, there is always, please underline the word always, there is always gradual decrease in energy content. There is gradual decrease in energy content in the successive trophic level from producers to consumers. Producers to consumers. ठीक है? I hope there is no problem in this understanding. This is the last one that we have. ठीक है? Right? Okay. Okay. So, pollutants in trophic level. That is the next topic. Pollutants. Okay, what are the pollutants? How do you define pollutants? But क्या? What are them? We have to define. We have to give them some kind of terms. क्या होते हैं pollutants? हाँ, toxic what? हाँ,
compressed, अगर compressed होंगी, that is the only utility of the pollutants. What are pollutants? Pollution तो करते हैं, but what are they? They are toxic, they are harmful, and what else? ये तो आप उसको repercussions बता रहे हो कि क्या क्या होता है. They are the suspended particles present in the air which are harmful for the survival of species, right? This is a formal way of telling, right? अभी pollutants हर ट्रॉपिक लेवल में कैसे होते हैं, डिफर करते हैं. देखिए, the amount of pollutants, देखिए, if you will eat some cereal which is already having some pollutant, don't you think that will also affect the consumers as well, right? So you have to stop that intake or consumption of anything which is present in the producers category at the other trophic level also. यहीं पे stop करेंगे तभी तो ऊपर नहीं जाएगा, right? We have to stop at the base level. Are you getting? Simplest form में, if something is not right, what the government do, what they do, they ban it, or they just release the warnings that you should not consume this thing or rice or maybe wheat for some time because the kind of quality which is coming is not fit for the consumption, right? So this kind of warnings are released, or many times it happens in a year. कभी आपको citrus food में मिलेगा, कभी आपको mangoes में मिलेगा, on and off it happens, right? Right, so these are what? Pollutants. There are some kind of, these are not fit for the consumption for the humans or any other mammal per se, right? So write down pollutants in trophic level. Pollutants in trophic level. Write down. Pollutants move from various trophic levels in the ecosystem because of two main processes. These two processes are known as bioaccumulation, or not or, it is and biomagnification. These are two processes. First process is bioaccumulation and biomagnification. First, write down about bioaccumulation. Bioaccumulation takes place in a single trophic level, or particular organism, or particular organism, or particular organism. Here pollutants are deposited. Here pollutants are deposited in a single organism over time. Over time. कोई भी चीज accumulate कब होगी? When that it will accumulate? When it is not, we are not able to eliminate it as per the processes. For example, when something will accumulate, when you are not able to what? Separate.
separate it, or what is the right word? जिसका intake and outtake, intake is more than the outtake. So that is important, that you should know that accumulation will only happen when you're not able to get rid of it. The moment we'll get rid of it, then accumulation will not happen. Accumulation happens when there is the intake is more, right, and we are not able to get rid as per the norms. किसी भी चीज में accumulation होगा, किस में होगा? ट्रॉफिक लेवल में हो सकता है accumulation, एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है accumulation, राइट. बायो accumulation मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर accumulate होना. accumulate मतलब if somebody has problem with the word accumulation, मतलब stored, right, इकट्ठा होना, concentrated. Okay, so this is what is happening in different trophic levels. कहाँ होता है सबसे पहले? Obviously सबसे lowest level पे होगा सबसे पहले. Most of the time it happen like that, but it's not always the case. It can also happen in the other trophic level also. ठीक है, अब write down bioaccumulation is the process where substances like pollutants मैम ये रिपीट कर दीजिए एक बार. बायो एक्यूमुलेशन. मैंने भी स्टार्ट ही किया, एक सेकंड. बायो एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस, क्या था, व्हाट वाज दैट रिटन, is the process. Bioaccumulation is a process where substances like pollutants or toxins, 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 comma, gradually accumulate in an organism's body faster than they can be eliminated. This buildup can occur through various exposure routes. This buildup can occur through various exposure routes, including air, comma, water, comma, food. Food. The food, khana. Write down. The substance concentration in the organism tissues increases over time, potentially leading to harmful health effects. Where have you missed? Health effects. कैसे हो सकता है bioaccumulation? See, you know that Japan has banned the use of the mercury. Mercuries are used. Where you will find mercury? Thermometer. So they have banned that, right? Because the mercury, when it will just flow in the ecosystem, for example, aquatic ecosystem, and fishes consume it, then they further, अब उस fishes को कौन खाएगा? Human beings. Then spread of what? Diseases. That's why they have totally banned it. Okay, there are other countries also, they are yet to ban it, but India has not done that. What we have decided, we will not use mercury,
we will stop the usage of mercury, but the complete ban of the mercury has not been done yet in India. Okay, but Japan is totally against it, because the maximum people in Japan, or maybe other countries also, they are dependent on what? Fish for their consumption, or maybe rice. Then what else? For example, polar bears. Polar bears are having a consumption of vitamin A. Vitamin A का जब बहुत ज़्यादा consumption हो जाता है, and how they will have the consumption? By eating seals. Have you seen the seal? कैसी होती है? No. Huh? Who has seen this thing? Discovery Channel. There a lot of times the seal has been shown. Seal, SEAL. Sometimes it stays under the water, or it comes on the land also. Arctic region में. What are seals? Just see. You can Google right now, all of you. Right? So seals, what they do, they consume what? Vitamin A. कैसे मिल जाता है उनको vitamin A? By eating the seal. So उसमें accumulate हो जाएगा. देखिए, जब भी ट्रॉफिक लेवल में आप ऊपर जाते जाएंगे, accumulation will increase. हमेशा याद रखेंगे. This is the point that you have to remember, that it will always increase. ये important point है prelims के लिए. Important point. ठीक है? It will always increase. जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें क्या होगा? The amount of accumulation जितना होगा as Ma'am, can you repeat that point? Yes, I will. So the amount of accumulation present in the first level is less. ठीक है? Pollutants जो है, but the next level में it will further increase. उसको जो खाएगा then it will further increase more, right? So the amount of pollutants will always going to, this accumulation is always going to increase. See? Seal. हाँ. Sometimes. Yes. But they do. Do you know that in Sabalbad area? Yes, they do. See, polar bears, when we do the behavioral studies of some of the animals, then polar bears are someone who kill the people for no reason. They kill the people for no, kuch reason nahi hota, and they kill them. That's why people who are living in a Sabalbad area, they are given guns. People who are going for their activities, for example, mining or staying or whatever, so they are given guns. They आपको अपनी protection खुद करनी है. There are some other animals, dangerous animals like lion, tigers. They do have some purpose. Maybe they want to eat you, or maybe they have some other purpose that they will confront with you. But polar bears, they do it for no reason. Okay? And they are very, very dangerous. They are dangerous. They look like a very cute teddies. No, they are not. वो जो आपको टेडी मिलता है for some reason, वो उसके लिए नहीं. Polar bears are very dangerous. Okay? All right. So this area is there. वहाँ पे आपको मिलते थे. अपनी प्रोटेक्शन आपको खुद करनी होगी. And they people are very much, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किल कर दोगे उनको कि they will be some legal action against you. ऐसा भी नहीं, because people themselves know that you have to protect yourself on your own, right? And there's people who are this is so rare, so they will knock you at the door and kill. ठीक है? Have you seen the places there? Arctic region में कैसे होते हैं? How are the huts and everything? हाँ, राइट. इग्नूस जैसा होता है, या फिर स्मॉल हट्स होती हैं कुछ, राइट? मैम एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि पोलर बियर सील को ईट करते हैं, तो विटामिन ए मिलता है उनको, ऐसा बोला आपने, कि क्या ए मतलब क्या होता है? विटामिन ए की बात कर रहे हो आप? There are different type of vitamins which are present, A, B, C, E, K, मैम D. वो तो पता है, पोलर बियर को सील को खाने में विटामिन ए मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है ना मैम. मतलब आपने कहा कि ये मार देते हैं उनको. See, over consumption of anything is bad. ओके, थैंक यू मैम. ओके. कोई भी अगर आप में ज्यादा विटामिन हो जाए, ऐसा भी नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल आप कोई विटामिन बहुत ही ज्यादा आपने ले लिया तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस, राइट। दे आर सर्टेन जिसको आपको लिमिटेड फॉर्म में ही चाहिए, जैसे आयरन, फॉर एग्जाम्पल योर सॉल्ट ऑल्सो। सॉल्ट क्या होता है, आपको क्या बोला जाता है, दे हैज टू बी अ रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट कंजम्पशन, क्यों, आयोडीन, राइट। ये सब चीजों का कम करना पड़ेगा, राइट। एक लिमिट में अच्छी लगती है हर चीज, लाइक ओवर हो जाती है तो फिर इट्स डेंजरस फॉर द हेल्थ, ठीक है। ऑलराइट, अब लिखेंगे, Ma'am, हाँ जी बताइए। ma'am, will you repeat that point you said? This is very important from the prelims perspective. Okay, what are you saying from the prelims perspective? हाँ, right, right, right. So I was saying that accumulation of this pollutants happen at the base level and it will always increase. सबसे ज्यादा देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेस लेवल से, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे होना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल विल थिंक लाइक दैट प्रोड्यूसर्स में होना चाहिए, नो. हाईएस्ट वन विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेंट्स प्रेजेंट. एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा, सबसे डेंजर इनके लिए, राइट, नॉट फॉर देम, इनके लिए जो है वो है, बट देन maximum amount of accumulation will happen in this species who are present on the top level, carnivores. ठीक है, ओके, राइट Okay, डाउन ma'am. biomagnification. Biomagnification. Biomagnification occurs across the trophic levels or in the entire food chain, or in the entire food chain. Full stop. Bioaccumulation in one organism leads to bioaccumulation, what I said, bioaccumulation in one organism, bioaccumulation in one organism leads to biomagnification in the food chain. Full stop. Pollutants or chemical concentration will increase along, pollutants or chemical concentration will increase along the trophic level of the food chain. Write down why there is biomagnification. Question. I'm writing the Excuse me, question ma'am. here. What is after concentration will increase? Along trophic level of the food chain. Okay. Why? First point, concentration increase. Write on the first point, concentration increase.
Write down. Toxins become more concentrated. Toxins, Toxins. Toxins become more concentrated as they move up the food chain from producers to primary consumers. From producers to primary consumers. To secondary consumers. To secondary consumers. And so on. And so on. Next point, food chain transfer. Food chain transfer. The process relies on the transfer of toxins. The process relies on the transfer of toxins from one organism to other, from one organism to other through consumption. I'm repeating again. The process relies on the transfer of toxins from one organism to another through consumption. Write down. Apex predators. Apex predators accumulation. Apex ऊपर जो आपके carnivores etc. predators. Third. This is third. Apex predator accumulation. Predators, especially those at the top of the food chain, at the top of the food chain, tend to accumulate the highest concentration of toxins. Right? Now write down examples of toxins. Substances that can biomagnify. Substances that can biomagnify include heavy metals like mercury. It includes heavy metals like mercury and arsenic. ARSENIC. Or pesticides like DDT. So these are the two terms important for your prelims also. Okay. So there are few terms. Please revise for 2 minutes and let me know if you have any doubt in this. Revise and let me know.
Clear everything? GDD की full मैं लेती हूँ. Something like die. I'll tell you only. Wait. डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. लिखिए, इसलिए नहीं बता रही थी. जिनको ये समझ आता है ये, जिनको ये समझ आता है उनके लिए ये. People who are good in chemistry can refer to this. People who are good in this can refer to this. वैसे क्या है ये? What is this? हाँ? This. What is this then? What this represents? Which double bond? bond, covalent. Okay. What is this? What do you call it as? Tetra? Okay. And what is this? Which group? Which group? Chlorine. Which group has been added to it? इथेन आई गेस सो. इथेन वो जो आपने CH लगाया है, दैट इज इथेन. Not really. मैम इथेन का फॉर्मूला तो यही होता है. इथेन मींस 2 उनका कार्बन और formula सिंगल यही बॉन्ड. होता है. हाँ, No, ethane. What? C2H? हाँ, C2H4. C2H4 है. नहीं मैम. तो फिर डाइक्लोरोडाइफिनाइल. क्यों बंद हो गया डाइक्लोरोडाइफिनाइल DTT? तो क्या हो गया था फिर? किसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी? Who were dying because of DDT? हाँ? No, not humans, eagles. Big cows में, आपका rats में it was getting accumulated and further vultures used to eat that. And उनमें accumulation होके they were getting died. So that's why DDT was stopped. अभी भी यूज होता है but illegally. ठीक है. So now we'll do certain terms. Productivity of the ecosystem. How to check the productivity. ये इतना important नहीं है means के point of view से, but prelims में शायद आपसे पूछ लिया जाए productivity of ecosystem. ये terms आपको पता होने चाहिए. At least you should have an idea what these terms refer to. Right? Write down productivity of the ecosystem. First, write the definition. It is a rate of formation आपने इथेन का फॉर्मूला गलत बताया है. इट इज C2H6. यस मैम, C2H6 मैं कैलकुलेट कर रही थी. कैलकुलेट की जरूरत नहीं है ना. ऐसे लगो H H H H H हो गया. मैम इधर में इट इज द रेट बोला क्या आपने? रेट RATE. RATE. RATE.
इट इज अ रेट, मेरा माइंड तभी वहां स्टक था तब तक, अब क्लियर है, ठीक है। इट इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास ब्रैकेट में ड्राई मास or the rate at which biomass increases per unit area per unit time or the rate at which energy is accumulated by the green plants in the form of organic substance, in the form of organic substance, right? So what is the productivity? What do you understand by this definition? सबसे पहला कीवर्ड क्या पकड़ेंगे इस डेफिनेशन में? पर यूनिट एरिया। एक एरिया में, पर यूनिट एरिया में आपका कितना प्रोडक्टिविटी है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, स्पीशीज, योर प्लांट्स which are producers, any other biomass which is present in a per unit area is your productivity. It is the rate of formation of biomass or the rate at which biomass increases per unit area per unit time, or the rate per unit area per unit time means divide, right? Area upon time, right? कितना एरिया में वो प्रोड्यूस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज क्या? बायोमास इज नोन एज योर प्रोडक्टिविटी। बहुत डिटेल में नहीं आएगा, पर डेफिनेशन ऊपर आ जाएगी और चार आपके पॉइंट्स होंगे, बट आपको अगर आपने सिंपल डेफिनेशन किया आपको आ जाएगा कि हाँ दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, इतना ही रेलेवेंस है इसका। क्या यूनिट होती है प्रोडक्टिविटी की? राइट डाउन, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। दिस इज योर एनर्जी जितना प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज योर एरिया एंड दिस इज योर टाइम। ठीक है, मैम एक चीज बता दीजिए, यहाँ ड्राई मास क्या मतलब है आपका? और ये जो आपने दूसरी लाइन में बताई ना, द एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये चीज और ड्राई मास बता दीजिए एक बार। मास बायोमास समझो बस, लाइफ का जो मास है, कोई भी लाइफ है, मैमल है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका मास, दैट्स इट। ठीक है, नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। कितने टाइप्स की प्रोडक्टिविटी है? There is two types. One is primary productivity and secondary productivity. Secondary productivity. Write down primary productivity. It is the productivity of autotrophs or producers.
It is the productivity of autotrophs or producers or green plants or the first trophic level or the first trophic level. It is an outcome of photosynthesis. It is an outcome of photosynthesis. Write down under primary productivity only. They are further divided into, इस तरह से आप एक और ब्रांच बनाएंगे और यहाँ पे आई एम ड्राइंग further divided into your gross productivity and net. Gross primary productivity, people who are doing, इकोनॉमी स्टार्ट हो गया आपका? Can you tell me the difference between gross and net? नहीं हुआ? ध्रुव, आप तो मत बोलो, मतलब आपने खोला नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, आपको तो पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस ग्रॉस एंड नेट, बताइए। बिल्कुल, इकोनॉमी में क्या होता है, आप डेप्रिसिएशन हटा देते हो, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या हटाओगे आप? ग्रॉस मीन्स व्हाट? कंप्लीट। लेकिन कुछ एनर्जी डेसिपेट भी होगी, जब आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं डेसिपेट होगा। अगेन डेसिपेशन किस वे में होगा? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दैट एनर्जी इन योर ओन प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। सो जब वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। ठीक है, ग्रॉस और नेट का वही मतलब है, दोनों में से माइनस होगा। इकोनॉमी में भी माइनस होता है, एनवायरमेंट में भी होता है, बट द टर्म्स गेट डिफर। वहां पे क्या माइनस हो रहा है? डेप्रिसिएशन, राइट? यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है? द अमाउंट विच इज बीन यूज्ड। ठीक है, राइट डाउन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका क्या फुल फॉर्म है? जीपीपी का तो ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म है? Why are you laughing? One of my, back then there was some time when there's somebody outside. Okay. So there was somebody, I was taking some class like very long back. So he said only one thing can help you to go through any exam, get through any exam. So I was like, we were very curious what he was talking about. That is only GGPP. And we were like wondering that what he is trying to tell. And he told us God, grace, and planetary positions. That is the only thing that can help you in getting to any exam. So from there, he was just explaining something, and then from there I was like, "ठीक है, okay." And he used to concentrate on this only. Let's say planetary positions, only God grace can help you get through the exam. Only this can happen. And I was like, "ठीक है, okay." हाँ, लिखिए पहले, जीपीपी लिखिए आप। Gross primary production. Gross primary productivity. Gross primary productivity. Write down. The total energy accumulated in the plant during primary productivity, the total energy accumulated in the plant during primary productivity is known as gross primary productivity.
a considerable portion of the solar energy, a considerable portion of the solar energy fixed by plants is utilized by plants in respiration, utilized by plants मैम रिपीट कर दीजिए. A considerable portion of the solar energy fixed by plants is utilized by plants in respiration to get the energy needed for their metabolism and other vital functions. Okay, in respiration to get energy needed for metabolism and other vital functions. Right on the next line, next definition, net primary productivity, NPP, net primary productivity. The amount of energy left, the amount of energy left after being consumed, the amount of energy left after being consumed in respiration is used for growth or producing new individuals, or for producing new individual, that is reproduction. This is known as NPP, which is net primary productivity, right? So what is this? GPP, your gross, means what? Your respiration minus your, right? So your net, sorry, this has to be added, right? So NPP क्या होगा? Your GPP minus respiration, right? Whichever you are using. अब आप में energy होगी, you can do your own task. Different tasks which are required for the your own sustenance. ठीक है? That is what. That's all for today. Achha, wait. But you haven't written the secondary productivity, na? Secondary, the time is left already. Like 4 minutes are left. We can do that. Write down secondary productivity of ecosystem. So we have done only one, right? Primary productivity. What about the secondary? We have not done that. Primary में भी two types करे हैं ना हमने, gross primary productivity, then net primary productivity. Now we have to do secondary productivity. Write down. Secondary productivity. Write down. This applies to consumers of the ecosystem. This applies to consumers of the ecosystem. Next point. The production of biomass, growth or addition of new individuals is referred to as secondary production. Is known as
secondary production. मैम बायोमास के बाद का वर्ड बता दीजिए बस, बाकी लिख लिया. Growth. Write down secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by heterotrophs. Who are heterotrophs? Yes. Okay. Next. Factors affecting the productivity. Last point. Factors affecting the productivity of ecosystem. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? योर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? योर सनलाइट, वाटर, सॉइल, सब कुछ डिपेंड करेगा. नाउ राइट डाउन factors affecting the productivity of ecosystem. Write down first sunlight, then water, carbon dioxide, mineral nutrition, then temperature. That's it. मैम डाउट पूछ लूँ अब मैं? हाँ पूछो. मैम एनपीपी आपका जो आपने लिखवाया वो नहीं समझ में आया. द अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ और दिस बट एनपीपी एक्चुअली है क्या? एनपीपी वही है जो आप प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, फिर अपनी रेस्पिरेशन के लिए अपने प्रोसेसेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, वो माइनस होगा. बिकॉज नेट प्रोडक्टिविटी क्या होगी जो एक्चुअली में किसी और के लिए यूज कोई कर सके, राइट? सो अगर आपका रेस्पिरेशन में बाकी प्रोसेस में चला जाएगा तो नेट तो वही प्रोड्यूस हुआ ना. व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? जितना रेस्पिरेशन के बाद आपका प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, जब टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज नोन एज ग्रॉस. जब रेस्पिरेशन माइनस कर देंगे दैट इज नोन एज नेट. ठीक है, तो जो आपने लिखवाया द अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ और प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल दैट इज रिप्रोडक्शन कॉल्ड एनपीपी. हाँ, तो दैट इज यूज फॉर देमसेल्व्स ओनली ना, हाँ. प्रोड्यूसर्स के लिए यूज होगा. ठीक है ना. और एक चीज ये बता दीजिएगा, ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक ग्रीन सब्सटेंस प्लांट बोले तो जो आपने ऑर्गेनिक एनी ऑर्गेनिक. हाँ प्रोडक्टिविटी Okay. ऑफ इकोसिस्टम में लिखवाया था ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब यही कार्बन वगैरह है क्या मैम? Correct. Something is which is having life is organic. The carbon is present definitely in them. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. Okay, well. Thank you, class.